impasse यानी rock, deadlock. At present there is impasse in the talk between India and Pakistan. Deadlock create हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में. Impasse. Ignoble unworthy. His ignoble motives were exposed by his wicked action. His ignoble motives यानी कि बुरे और नीच motives थे उसके unworthy. His ignoble motives were exposed by his wicked actions. Imbroglio means complicated situation. जटिल सिचुएशन. इम्ब्रोग्लियो. कश्मीर प्रॉब्लम हैज बिकम नेशनल इम्ब्रोग्लियो विच हैज इलुडेड सॉल्यूशन एस्केपेड. यानी कश्मीर प्रॉब्लम इज इम्ब्रोग्लियो, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान के बीच में. इंडोलेंट यानी लेजी, लेथर्जिक. सी वाज फीलिंग इंडोलेंट बिकॉज ऑफ द स्वेल्टरिंग वेदर इन द आफ्टरनून. लेजी आलसी फील कर रहा है बड़ी गर्मी में. स्वेल्टरिंग वेदर इन द आफ्टरनून. इंडोलेंट. इम्ब्यूड ओतप्रोत. इम्ब्यूड मींस ओतप्रोत. फिल्ड विद. इट इज अ पीटी दैट आवर पॉलिटिकल लीडर्स आर नॉट इम्ब्यूड विद द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म. से नहीं है वो, ओतप्रोत नहीं है वो. इम्ब्यूड ओतप्रोत फाइन फिल्ड विद किसी चीज से भरा होना. इम्ब्यूड यानी इम्ब्यूड विद द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म. Our leader और पता ही है नेशनलिज्म की स्पिरिट से. इंट्रिंसिक ऑफ वैल्यू विद इन रियल क्वालिटी. द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द इंडियन रूपी इज ऑन डिक्लाइन. द इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इंडियन रूपी की डिक्लाइन हो रही है ऑफ वैल्यू, और रियल क्वालिटी जो है इंट्रिंसिक. Itinerary plan of a journey. Plan of a journey. Delhi has been included in the itinerary of the American president's visit to India. यानी plan of a journey itinerary. Impeccable यानी faultless यानी कि कोई गलती ना हो जिसमें. There is no person in the world who can claim to have impeccable character. जिसकी impeccable character है, जिसके character में कोई fault नहीं है. Impeccable character. और impede to hinder, hamper economic crisis in the country will impede the industrial progress. Impede यानी कि to hinder या hamper करना, रोक देना. economic crisis in the country will impede the industrial progress को रोक दिया है. Insight. Affiliated to the Delhi University or afflicted with extreme poverty. Incite यानी arouse to action. The visit of the religious leader incited the communal riots in the city. Incite करना, उकसाना, arouse to action. Inept handling यानी अयोग्य, incompetent, जो अयोग्य हो, incompetent हो, inept हो. Inept handling of the foreign policy by the Congress party has created many complicated situations for the country. Inertia, निष्क्रियता, passivity, निष्क्रियता होता है. inertia जो रुके रहना ऐसा. The modern youth is suffering from inertia because they are not optimistic about their future. निष्क्रियता. Indigenous यानी native यानी कि देसी, स्वदेशी. India must not depend on foreign technology, for there is no lack of indigenous talent in the country. Innate का मतलब जन्मजात या फिर inborn. Innate poets are born with innate talent for writing poetry. उनमें जन्मजात से भरी होती है भाई साहब. Innate. Insular narrow-minded. Insular narrow-minded. Fanatics have insular view about men and matters. Fanatics यानी कट्टरपंथी have insular view narrow-minded about men and matters. Indict accuse, charge. Indict मतलब means accuse, charge. The officials of departments were indicted by court financial irregularity. The officials of the departments were indicted by the court for financial irregularities. Accuse charge कर दिया. Indict accuse charge. Intrude घुसपैठिया. Interfere या interpass. इन जो trespass. Interfere, trespass, intrude. I don't like if anyone try to intrude on my privacy. कोई intrude नहीं कर सकता, कोई भेद नहीं सकता है. Interfere नहीं कर सकता. Trespass नहीं कर सकता. Inkling यानी कि आभास, clue, hint. I had no inkling that she would break with her friend so soon. I had no inkling. मुझे कोई आभास नहीं था, कोई clue hint नहीं थी that she would break with her friend so soon. Impervious जो कोई परवाह न करे. Unaffected. He never listened to his parents and is always impervious to their advice. जिस पर किसी बात का असर ना हो. Impervious, unaffected. Ingenuous निष्कपट. Ingenuous नया मतलब beginners, naive, artless, credulous, gully boy. Children are ingenuous by nature. Inept, ingenuous, naive, artless, credulous. Inept, unsuitable. The remarks she made at the party annoy many because they were inept. Unsuitable है, inept है, unsuitable. Inscrutable, incomprehensible, जो समझ में आसानी से समझ में ना आए. The laws of nature are inscrutable, incomprehensible, comprehensible, जो समझ में आए. Understood, incomprehensible, जो आसानी से समझ में ना आए. Instance an example. Instance example. There are a number of instances of his misbehavior, but I have always overlooked them. Ingrained का मतलब deeply fixed in mind. Dishonest appears to be ingrained in his character. उसके character में fix है, ingrained है, भरे हुए हैं. Deeply fixed in mind, ingrained. Innocuous and harmless. It is now proved that soft drink are not innocuous and harmless. कोई हार्म नहीं पहुंचाती, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती. ठीक है, harmless है, harmless. Innocuous, INNOCUOUS, innocuous. Inordinate, असामान्य. Excessive. I don't understand the reason for his misordinate delay in replying to my letter. To reply in my letter. Inordinate. I don't understand the reason for his inordinate delay in replying to my letter. Irksome dull, boring, tedious, थकाऊ. I don't like to do any irksome job. Boring. However profitable it might. चाहे वो भली profitable हो, पर मुझे पसंद नहीं है. Irksome job. Tedious. Imbibe, आत्मसात करना. Imbibe यानी आत्मसात. Drink, take in ideas. Every Indian must imbibe the spirit of nationalism. से आत्मसात होना चाहिए, भरे हुए होना चाहिए. Imbibe the spirit of nationalism. Every Indian. Impertinent यानी अपने से बड़े का सम्मान नहीं करना. Impertinent. Insolent, impudent. अपने से बड़े का सम्मान नहीं करना. Impertinent. She was reprimanded. डांटा गया. She was reprimanded यानी डांटा गया for her impertinent behavior. चलिए उसे डांटा गया. Intermittent यानी रुक कर. Irregular, continual, heavy damage. Continual है, irregular यानी कि थोड़े समय ले लेकर.
Continual heavy damage has been caused to the building on account of intermittent rain for the last 2 months. Heavy damage has been caused to the building on account of intermittent rains for the last 2 months. For the last 2 months. Intermittent रुक रुक कर intermittent रुक रुक कर. Confirm to सहमत होना, confirm to सहमत होना, और confirm इंश्योर करना. ये confirm इंश्योर, confirm to सहमत होना, आई लगा दिया इंश्योर. और क्योर फॉर नाउन के रूप में, क्योर फॉर नाउन, क्योर्ड ऑफ वर्ब के रूप में, क्योर्ड ऑफ वर्ब के रूप में यूज होता है. क्योर फॉर नाउन, क्योर फॉर नाउन होती है. इमैकुलेट यानी प्योर, स्पॉटलेस. सी इज ऑफन ड्रेस इन इमैकुलेटली वाइट ड्रेस. प्योर और स्पॉटलेस, त्रुटिहीन. परफेक्ट है जो प्योर है, स्पॉटलेस है. इमैकुलेट का मतलब बिल्कुल त्रुटिहीन, परफेक्ट होना चाहिए. सी इज ऑफन अनेक बार ड्रेस इन इमैकुलेटेड वाइट ड्रेस में दिखती है. इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी वोलनेस, पूर्णता. अपराइटनेस, इंटेग्रिटी. द इंटेग्रिटी ऑफ माय ब्रदर इज नॉट टू बी क्वेश्चन. कोई सवाल नहीं उठा सकता है. वोलनेस पूर्णता और अपराइटनेस निष्ठा पर इंटेग्रिटी. द इंटेग्रिटी ऑफ माय ब्रदर की निष्ठा पर सवाल क्वेश्चन नहीं उठा सकता. इंसेसेंट होता है अनइंटरप्टेड और कंटिन्यूअल, यानी लगातार चलते ही रहना. वाइस बिल्कुल लगातार बिना ब्रेक लिए. इंसेसेंट, अनइंटरप्टेड, कंटिन्यूअल. वी हैड टू कैंसिल आवर विजिट टू आगरा बिकॉज ऑफ इंसेसेंट रेन. सांस नहीं ले रही है बिल्कुल. इंसेसेंट रेन. इंडिजेंट पुअर यानी पुअर. ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज स्टडी बिकॉज हिज पेरेंट्स वर इंडिजेंट. गरीब है वो. इंडिजेंट यानी पुअर. ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज स्टडी बिकॉज हिज पेरेंट्स वर इंडिजेंट. inundate, overflow, flood. The whole village was inundated, यानी कि और फ्लड में आया. The whole village was inundated with flood water. Inveterate का मतलब deep rooted. Ingrained जिसमें अंदर भरा हुआ. Ingrained, deep rooted, habitual, आदती है. He is an inveterate liar, यानी कि वो पहले से ही जन्मजात से ही झूठा है. He is an inveterate liar, deep rooted इसमें habitual है. He is an inveterate liar. Inimical, inveterate होगा. Inimical यानी unfriendly, hostile. Inimical यानी enemy type. Inimical, unfriendly, hostile है. Enemy है. I feel my friends have turned inimical and are working against my interest. I feel my friends have turned inimical and are working against my interest. Innovation, introduce new thing. Innovation यानी कि introduce new thing. Impute, attribute, ascribe. Attribute करना, श्रेय देना, किसी को उत्तरदायी मानना. मेरे सक्सेस के पीछे यह है. Attribute देना. Impute, ascribe. You can impute his failure in life to his fickle-mindedness. You can impute his failure in life to his fickle-mindedness को जिम्मेदार ठहराता है. Ascribe, attribute, श्रेय देना. You can impute. और instigate, impute, attribute, ascribe. Instigate, urge, incite करना. Instigate, urge, incite उकसाना. China is instigating trouble on our borders. China is instigating trouble on our borders. Instigate उकसा रहा है. Infinitesimal, very small. Infinitesimal, very small. They found infinitesimal traces of poison in the drink. Very small. Infinitesimal, small भी याद रख सकते हैं इसको. Infinitesimal. Irritate करना. Annoy करना, चिढ़ाना. His insolent behavior, उसका बुरा बर्ताव. His insolent behavior always irritates us. इरिटेट कर दिया मैं. Impending, imminent, approaching. Impending यानी शीघ्र होने वाला. Impending में है और impending शीघ्र होने वाला. Imminent है, अभी होने ही वाला है. Imminent. Approaching होने ही वाला. Some persons have intuition about impending calamity. शीघ्र होना. Insipid यानी कि बेस्वाद. Tasteless, all felt bored by his insipid jokes है. Tasteless. Jovial का मतलब होता है merry और happy. MERRY, merry, happy. He is a much sought after person because of his jovial nature, यानी हंसमुख मिजाज का. jovial nature कैसा होता है? हैप्पी, खुश मिजाज. jovial nature, JINS, jinx यानी that bring bad luck. jinx जो बुरा संकेत लाए, bad luck. Superstitious यानी अंधविश्वास को बोलते हैं. superstitious persons consider number 13 a jinx. बताओ नंबर 13 जो है वो bring bad luck लाता है. जो भी लाता है think bad luck. किससे? जो अंधविश्वासी होते हैं वो सोचते हैं कि नंबर 13 जो है jinx लाता है, bad luck लाता है. JINS, jinx. 13 नंबर जो है आपका बेड लक वाला नंबर है. सुपरस्टिटिशियस कौन? अंधविश्वासी. पर्सन कंसीडर नंबर 13 जिंक्स. जैडेड यानी टायर्ड. एग्जॉस्टेड, जैडेड यानी बहुत ही जड़ा हुआ है और थक गया है. टायर्ड, एग्जॉस्टेड, थक गया. ही फेल्ट जैडेड आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम जर्नी. बहुत ही जड़ा है वो, बहुत ही मोटा है इसलिए वो थक जाता है. ऐसे याद रख सकते हैं. टायर्ड, एग्जॉस्टेड, जैडेड. jargon यानी लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. jargon यानी लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द jargon ऑफ ट्राइबल पीपल. इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द jargon ऑफ ट्राइबल पीपल. ट्राइबल पीपल की जो भाषा है वो बहुत ही डिफिकल्ट है समझना. ठीक है. अंडरस्टैंड द jargon, लैंग्वेज उनकी जो है वो डिफिकल्ट है. jargon ऑफ द ट्राइबल पीपल. जंबल, मिक्स अप. सी ट्राई टू पुट इन ऑर्डर में जमाओ. एवरीथिंग लाइन जंबल पड़े हुए हैं. jot यानी कि राइटिंग हरीडली, जल्दी लिखना. तो जर्नलिस्ट वर जॉटिंग डाउन जोरदार तरीके से लिख रहे हो. जॉटिंग डाउन द स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन हास्ट. हास्ट बहुत जल्दी. JUNK जंक यानी पुरानी बेकार. डिस्कार्टेड थिंग्स. ही इज अ जंक डीलर. डिस्कार्टेड थिंग यानी पुरानी बेकार डीलर. ही इज अ जंक डीलर. जंक डीलर है. जंक लगी इसमें. जंक डीलर है. पुरानी बेकार. जंक पुराना बेकार. जुडिशियस होता है वाइस, ईमानदार. ही हैज बीन सक्सेसफुल इन लाइफ बिकॉज ऑफ हिज जुडिशियस प्लानिंग इन बिजनेस. क्योंकि उसकी बहुत अच्छी प्लानिंग है. वाइस, ईमानदार है. ही हैज बीन सक्सेसफुल इन लाइफ बिकॉज ऑफ हिज जुडिशियस प्लानिंग इन बिजनेस. एट्रीब्यूट उत्तरदायी मानना, श्रेय देना, कारण ठहराना, किसी को कारण ठहराना.